Students, Assalamu alaikum. Today we will start our new chapter, our environment. And topic जो हमने इसमें cover करना है वो है biodegradable and non-biodegradable wastes, ecosystem and its components, functioning of ecosystem, producers, consumers and decomposers, importance of decomposers, food chains and food webs, trophic levels, effects of man's activities on ecosystem, flow of energy in food chains, 10% law accumulation of harmful substances in food chains, depletion of ozone layer. Now let us start first. What's environment? Environment जो है it is a physical and biological world where we live in. जो भी हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट. और जो हमारा इन्वायरमेंट है इट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर वाटर बॉडी सॉइल एंड इट आल्सो इंक्लूड्स all organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi, and they are known as decomposers. And all these constituents of environment they interact with one another to maintain a balance in environment in a natural way. But we human beings are only organisms who change the environment to fulfill their needs. हम ही अपना environment को हम ही अपने healthy environment को disturb करते हैं किस लिए? To fulfill our needs like clothing, like housing, transport industry. And we can see if there will be uncontrolled activities of human beings they are damaging the balanced and healthy environment. Now अब हम देखते हैं कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं by various activities of man they are poisonous to some extent and can be divided into two main groups, biodegradable and non-biodegradable wastes. वो waste materials which can be broken down into non-poisonous substance in nature in due course of time by the action of organisms, microorganisms, they are known as biodegradable wastes. For example, कुछ waste जो है they are decomposed by our these decomposers like microorganisms, and they do not pollute our environment. इसमें for example कुछ waste जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर एक्ट करते हैं और वो उनको डिकम्पोज करते हैं लाइक एनिमल बोन्स है, लेदर है, टी लीव्स है, कॉटन है, वुड है, पेपर है, काउ डंग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है. ठीक है, अगर हम देखते हैं अपने घरों में अगर हम ये वेस्टेस कुछ दिनों के लिए फेंकते हैं बाहर हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम दे आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे डू नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट बट दे कैन पोल्यूट द एनवायरनमेंट व्हेन their amount is large which cannot be decomposed into harmless substance in nature at right time. ठीक है, अगर हम ढेर लगाएंगे इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के दैट कैन पोल्यूट और एनवायरनमेंट. ठीक है, बट अगर इनको हम स्मॉल अमाउंट्स पे कहीं डालते हैं दे आर इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे डोंट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट. देयर इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. वो वेस्ट मटेरियल्स बेटा जो विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस इन नेचर. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम प्लास्टिक डालते हैं, प्लास्टिक की बोतल हम डालते हैं या पॉलीथीन बैग्स हम डालते हैं, हम क्या देखते हैं दीज वेस्ट दे आर नॉट डिकम्पोज, दे आर नॉट मेड लेस टॉक्सिक, दे आर नॉट मेड less poisonous easily because they are not acted upon by microorganisms. और वो waste materials है जो which cannot be broken down into non-poisonous or harmful substance in nature, they are known as non-biodegradable wastes. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो प्लास्टिक की, डीडीटी की, बॉल पॉइंट पेन की, ग्लास ऑब्जेक्ट्स की, मेटल आर्टिकल्स की, आयरन नेल्स की या सिल्वर फॉइल्स की, रेडियो एक्टिव वेस्ट्स की, ये सब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. दे आर मेजर pollutants of our environment. This means
These non-biodegradable waste they pollute our environment. For example, अगर हम प्लास्टिक आर्टिकल्स या गिलास आर्टिकल्स या मेटल आर्टिकल्स देखेंगे, they can cause a lot of pollution in our surroundings. ठीक है. एंड नाउ हम बोलेंगे कि जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वाई दे आर एक्टेड अपॉन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका क्या रीज़न है? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर, दे आर आल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में. दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. क्वेश्चन भी आता है हाउ वाई सम सब्सटेंस आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. दे ब्रेक डाउन द नेचुरल मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल. हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उन्हीं सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं जो फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम नेचुरल मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं, या ये नेचुरल मटेरियल्स को ही डिकम्पोज करते हैं, बट डू नॉट ब्रेक डाउन द मैन मेड मटेरियल सच एज प्लास्टिक. दिस मीन्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. दे ओनली ब्रेक डाउन द नेचुरल प्रोडक्ट्स or products that are made from natural materials and they don't decompose man-made materials. ठीक है. That is why it is due to this property of decomposers that organisms, that waste जो है, they are, some wastes are biodegradable and some are non biodegradable. ये है बेटा हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का. और एनवायरनमेंट का हमने पहले भी ये पढ़ा है. नाउ आई एम रिवाइजिंग this question. It may be asked in our examination, what are biodegradable and non-biodegradable waste, and second, why are some substances biodegradable and non-biodegradable. या आपने याद रखना है कि या ये भी आता है कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट्स एनवायरमेंट. एनवायरमेंट आपने सिंपली याद रखना है कि इट इज़ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन. और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, biodegradable waste which can be broken down into non-poisonous substance by action of microorganisms, and non-biodegradable which cannot be broken down into non-poisonous substance in nature. And why some substances are biodegradable and some non-biodegradable? It is due to specific action of microorganisms that some substances are biodegradable and some non-biodegradable. Thank you.